यस फ्रेंड्स, अब ये नेक्स्ट फिफ्थ रूट में ले रहा हूँ, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आपको वर्ड्स मिल जाएंगे। इन वर्ड्स को आप कलेक्ट करोगे तो आप देखोगे यू आर ए डिफरेंट पर्सन, क्योंकि इन वर्ड्स को जितना यूज करोगे आप, ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैन काइंड को स्टडी करते हैं, एनी सब्जेक्ट रिलेटेड टू द मैन काइंड और ह्यूमन बींग्स, क्योंकि सबका मेन ऑब्जेक्टिव है भाई कि मैन कहाँ से पैदा हुआ, किस तरह से उसका ओरिजिन है, क्या डेवलपमेंट हुआ। तो वो जो स्टडी करते हैं मैन काइंड को, ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट, ओरिजिन, जेनेसिस, जो भी स्टडी करते हैं, उन लोगों के लिए ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से आप देखोगे कि यू विल गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन और बहुत सारे वर्ड्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इन वर्ड्स पर बेस्ड क्वेश्चन जो अगर वोकैबुलरी आती है तो आप उसका आंसर भी दे सकते हो, आपको लर्न करने में आसानी होगी। क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये वर्ड्स आपकी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी इंक्रीज इन योर माइंड। बहुत सारी आपको नॉलेज आ जाएगी इन वर्ड्स को पढ़ने पर। आप देखोगे कि ये वोकैबुलरी आपको इतनी स्ट्रेंथ देगी, इतना इनेबल कर देगी कि यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन, और इतनी नॉलेज आपकी बढ़ती जाएगी। क्योंकि ईच रूट इज गिविंग यू 50 to 40 वर्ड्स। Usually you will understand every word whenever it will come in your reading, your studying, your writing. Whenever you will see this word in the newspaper or any book, wherever you will find, you will recognize that this word is this. This meaning of this word is this. ऐसा अनुभव है मेरा भी, और सब लोग जानते हैं कि जितनी भी इंग्लिश डिक्शनरी बनी है वो सब रूट्स, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस पर बेस्ड है। एटिमोलॉजी उसकी क्या है, कहाँ से ओरिजिन हुआ है, ये आपको दिया होता है। रूट, मोस्टली रूट्स 3 मेजर लैंग्वेजेस हैं, लैटिन, फ्रेंच और ग्रीक। ओके, उसके अलावा बाकी जितनी लैंग्वेज हैं वर्ल्ड की, सब में से कुछ वर्ड दिया हुआ है। ये मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये जानना, क्योंकि आपको रूट्स, प्रीफिक्स, सफिक्सेस अगर आप नहीं आते हैं तो यू आर नॉट एबल टू speak English fluently, not writing English fluently. Writing will not be there, speaking will not be there. You cannot be a fluent speaker afterwards if you are not having vocabulary. So strong vocabulary is giving you lot of benefits. Throughout your life you will be benefited. Okay, चलिए हम इस पर डिस्कस करते हैं। ये रूट जो है 51 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंथ्रोप मीन्स मैन होता है, और एंथ्रोपोज ये जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ग्रीक लैंग्वेज में एंथ्रोपोज का मतलब होता है मैन से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं, ये वोकैबुलरी है, और ये जो रूट है वो मैन पर बेस्ड है। ठीक है, एंथ्रोपोज मीन्स होता है मैन। चलिए हम स्टडी करते हैं इसके बारे में। तो ये वर्ड है एंथ्रोप मीन्स मैन। कहाँ से लिया गया है ये? इट हैज बीन टेकन फ्रॉम Greek language, taken from Greek language, और Greek word, what is that Greek word? क्या वर्ड है उसका नाम? उसका नाम है भाई एंथ्रोपोज। इस एंथ्रोपोज, ANTHROPOS, एंथ्रोपोज, that means man और ह्यूमन बीइंग। ये एंथ्रोपोज जो वर्ड है ये यहाँ से लिया गया है। इस वर्ड को एंथ्रोप ग्रीक वर्ड है ये। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन इज द एटमोलॉजी, कहाँ से इसका ओरिजिन है, ग्रीक लैंग्वेज है। ग्रीक लैंग्वेज में वर्ड एंथ्रोपोज होता है, उसमें से ये वर्ड दिया गया है। इस पर बेस्ड बहुत सारे वर्ड्स आप देखेंगे। अब मैं इन वर्ड्स को लेता हूँ। मैंने 10 वर्ड्स लिए हुए हैं। आप देखोगे 10 वर्ड्स ही नहीं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। मैं कुछ और भी वर्ड्स आपको दूंगा यहाँ से, और इन्हीं वर्ड्स में बहुत सारे बना सकते हैं। एडजेक्टिव बना सकते हैं, नाउन है तो एडजेक्टिव बना सकते हैं, और अगर वर्ब है तो उसका एडवर्ब बना सकते हैं, एंड वर्ब एडजेक्टिव बना सकते हैं, नाउन प्रोनाउन बना सकते हैं। प्रोनाउन तो नहीं बना सकते, क्योंकि प्रोनाउन तो हम सब, जैसे अगर कोई वो है मैस्कुलिन जेंडर है तो उसका ही आएगा, और फेमिनिन जेंडर है तो उसका शी आएगा, प्रोनाउन हो गया। लेकिन और इट आएगा एनिमल्स के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम प्रोनाउन तो नहीं बना सकते, बट नाउन में से एडजेक्टिव और वर्ब में से एडवर्ब बना सकते हैं। अगर एडवर्ब जाए तो वर्ब जरूर होगी इसमें। इस तरह से आप बहुत सारे इसी में से, इन्हीं वर्ड्स में से कम 30 तो बना सकते हैं। 10 है, 3 बना सकते हैं। अगर नाउन है तो एडजेक्टिव बना सकते हैं, उससे रिलेटेड एडवर्ब देखो क्या हो सकती है, वर्ब क्या हो सकती है। 3-4 वर्ड एक वर्ड में से बना सकते हैं। इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि आप अच्छी तरह से वोकैबुलरी समझना है तो इनमें से ही वर्ड्स आप इजाद करिए, निकालिए,
अगर वर्ड्स ओरिजिन आपको नहीं मालूम है तो डिक्शनरी सेलेक्ट करिए, डिक्शनरी में से आप वर्ड की ओरिजिन देख सकते हैं, कहाँ से आ रहा है, क्या है, इसका मतलब क्या। चलिए मैं इन वर्ड्स को लेता हूँ। पहला वर्ड है एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये क्या वर्ड होता है? एंथ्रोपोजियोग्राफी, GRAPHY, एंथ्रोपोजियोग्राफी, जियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रोपो man. What is this? What is this? Anthropogeography. Geography means study of the man on the or distribution of man on the earth. Where man is distributed on the earth. The study of the man distributed upon the earth. Geography. Okay. Anthropogeography means study of man on the earth. Distribution of the man on the earth. The study of distribution of man in the world or on the earth. Right. This is क्या है? ये noun है. Naturally noun word है. Parts of speech. इसका मतलब है study of distribution. This is study of distribution of, क्या मतलब है इसका? study of distribution of man in the world or on the earth. In the world. ये है इसका मतलब. Second word देखिए. Second word लिया हुआ यहाँ पर एंथ्रोपिक. That means related to the human, of or related to the man, pertaining to the mankind. That is anthropic. Next word is anthropic. Anthropic. Anthropic adjective होगा. Yeah, it is adjective. That means relating to, of, or pertaining or relating, pertaining to mankind. Pertaining to mankind. इसका मतलब ये हुआ. ठीक है. Anthropic means related to the man, pertaining to the man, concerned to the man. Okay, of man, of mankind, of pertaining to mankind, related to mankind. This is anthropic. Let me take third word also. तीसरा word देखिए. Anthropocentric. When the study of center is man. Okay, that is anthropocentric. Means assuming that man is the center of all. That is anthropocentric. Third word, anthropo. Anthropocentric. 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 Adjective होगा. Adjective है. Anthropocentric means assuming that man is the center of all. इसका मतलब है assuming that man is the center of all. The center of all. Naturally, anthropocentric. Center is the mankind. Center is the man of all. Assuming this, that man is the center of all human beings, all animals, man is the center. These three words are taken. अब देखते हैं next word क्या क्या है. मैंने यहाँ 10 words लिए, लेकिन 10 words के अलावा आप देखेंगे कुछ और words भी लूँगा. चलिए fourth word देखिए. अब fourth word में है जी anthropolatry. Anthropolatry, ये देखिए. ANTH. Anthropolatry. Anthropolatry. This is noun here. Anthropolatry noun है. Okay. Anthropolatry, worshipping man as God. जैसे idolatry. Anthropolatry. Anthrop means man, latry means worshipping as God. So anthropology means the worship of man as God. The worship of man as God. This is idolatry. Idol means statue. Worshipping of statue.
Okay, worshipping of God as or considering as a statue or as an idol worship, or that known idolatry. Similarly, anthropolatry. So anthropolatry is similar to the idolatry. Okay, I mean latry is worshipping as God. Okay, so worshipping as God. This is the fourth word. Fifth word देखिए, fifth में है anthropology. This is anthropology. Anthropology. Again now, this is anthropology means science of mankind, science of man. Science of man. ठीक है जी, anthropology. Now anthropologist, the person who study the anthropology, right? Or the scientist of mankind, scientist of man, who is studying man at the center or at the study. Okay, his study point is man. That person is known as anthropologist, who has the knowledge, complete knowledge of the science of man. That is anthropology. Sixth word है anthropologist. Anthropolog. Okay. Sixth word यहाँ लिया anthropoid. Let me check anthropoid. 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 Anthropoid adjective होगा naturally. ये adjective. Anthropoid means resembling man. जैसे कोई ऐप है, लंगूर है कोई, जिसकी शक्ल आदमी से मिलती है, तो वो एंथ्रोपॉइड बोल देते हैं. The ape is anthropoid because it is resembling a man. Okay, so anthropoid means resembling man. In adjective man, that means resembling man. As an anthropoid ape. Okay, an anthropoid ape, or yeah, this is ape, ape, anthropoid ape. Okay, तो इस तरह से हम एंथ्रोपॉइड बोलेंगे उसको जिसकी शक्ल आदमी से मिलती है. जैसे एक एप होता है, लंगूर की शक्ल मिल जाती है कभी कभी आदमी से, बिल्कुल शक्ल ऐसी मिलती है. इवन जो है ना, मोस्टली एप की शक्ल आदमी से मिल सकती है, तो हम उसको एंथ्रोपॉइड एप कह देते हैं. ठीक है. देन एंथ्रोपॉइड वर्ड ले लिया. नेक्स्ट लेते हैं सेवंथ वन एंथ्रोपोलॉजिस्ट. जैसे मैं इसके बारे में कह रहा था, सेवंथ वन एंथ्रोपोलॉजिस्ट. एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या मतलब हुआ इसका? नाउन वर्ड है, लॉजिस्ट. एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये नाउन होगा. The person, logist, IS लगाने पर, the person who study the science of man. Okay, the person who is well known about the development of man or knows what is the science of man, that is anthropologist. Now, one who is versed in anthropology, that person, one who is versed or very much expert in the science of man. Okay. So, anthropologist, one who is versed in anthropology. Anthropology, the science of mankind. The science of man, the study the man as the science. So, study of science of man is the person who is anthropologist. The person who is studying man as mankind as a science. That scientist, that person who is versed in development of man, who knows everything of man. Okay, this seventh word हो गया. एट्थ देखें. अब इसमें हमने देखा एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपॉइड, we have taken anthropoid, anthropolatry, anthropocentric, anthropic, anthropogeography. Right? अब देखिए एट्थ वर्ड क्या है? फिलैंथ्रोपी. ये बहुत ही अच्छा वर्ड है. फिलैंथ्रोपी.
ये है लव ऑफ मैनकाइंड। बिकॉज फिल का मतलब होता है, ये जो फिल वर्ड है इसका मतलब लव। एंथ्रोप मीन्स मैन, so love of mankind, entropy, mankind. The study of this noun here, anthrop. What is this? Philanthropy, love of mankind. Philanthropy is a noun, love of mankind. This means love of mankind. ठीक है जी, इसका मतलब हुआ love of mankind. Philanthropy, phil means love होता है, anthrop means mankind. The study of man or loving mankind, that is philanthropy. Misanthropy word होता है, let me take misanthropy, ANTHROPY, misanthropy. Mis means होता है to hate mankind. This is again noun word है भाई, misanthropy, noun, hatred of mankind. This is hatred of mankind. Hatred of mankind, misanthropy बोलते हैं इसको। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड 10th में ऊपर लेता हूं, मिसैंथ्रोपी। हमने मिसैंथ्रोपी तक पढ़ा, अब आते हैं आप 10th वर्ड। 10th वर्ड में है एंथ्रोपोमीटर। एंथ्रोपोमीटर, राइट? एंथ्रोपोमीटर, व्हाट इज एंथ्रोपोमीटर? अगेन नाउन है ये, एन इंस्ट्रूमेंट, okay, with the help of which we measure the human body or limbs of human body, parts of human body. That instrument is known as anthropometer. So any instrument which is used to measure the mankind, measure the parts of human body, that is anthropometer. So anthropometer is noun here. Naturally, an instrument. What is anthropometer? An instrument to measure the parts of the human body, parts of the human body, parts of the human body, or parts of man, or limbs of the human body, right? Parts of human body or limbs of a man. That instrument is known as anthropometer, right? Anthropometer is this. Anthropometer, with the help of this instrument we can measure the size of the parts of the human body or limbs of the human body. This is anthropometer. अब देखिए 2-3 वर्ड्स और देता हूँ मैं आपको। ये 10th हो गया था, अभी 11th वर्ड देखिए, इसके बारे में स्टडी करिएगा। What is anthropogenesis? Anthropogenesis, GENESIS. Anthropogenesis. That means, what is the origin of mankind? Anthropogenesis. Again, this is noun. The study that what is the origin of, what is the development, how man was development and origin of man, उसको हम एंथ्रोपोजेनेसिस बोलते हैं। जेनेसिस मीन्स ओरिजिन, जेनेटिक जो बॉडी, अब यहाँ से एंथ्रोपोजेनेटिक, the related to the origin or development of mankind. This is the science, the study that what is the development and origin of man. Okay, उसके बारे में how man was developed, how man was came into the being, came into the existence on the earth. That origin, to study the origin, to development of man is known as anthropogenesis. एक बार ही हो गया। 12th वर्ड देखिए, नेक्स्ट है एंथ्रोपोग्लॉट।
एक वर्ड और लिखो, एंथ्रोपोग्लॉट, GLOT। एंथ्रोपोग्लॉट मीन्स ये नाउन है, the animal which has the same tongue as man, the animal or an animal which has same tongue as that of man, same tongue, right? tongue as that of man, as that of a man. That person, that animal is anthropoglot. Anthropoglot, right? So anthropoglot is another word. Number of other words you have. Anthropoglotic adjective is formed. This is noun. Anthropoglot is noun. Anthropoglotic, the resemblance of any animal's tongue with that of man. That relation of animal which is have the same tongue as that of man. एंथ्रोपोग्लॉटिक एडजेक्टिव बन गया। इससे बहुत सारे एडजेक्टिव बना सकते हैं, नाउन है उनमें से एडजेक्टिव बना सकते हैं। अगर एडजेक्टिव दिया हो तो उसकी नाउन क्या है सर्च करिए, इस तरह से आपको इतने सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, यू विल बी ए डिफरेंट पर्सन। आप अपने को एक अलग से पाएंगे। वाह, I have a lot of source of information regarding the origin of words, different roots, prefix, suffixes। और आपको आ जाते हैं, you will be master of all the words of English dictionary. This I can promise you। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि नए वर्ड्स आ रहे हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस से, जो वर्ल्ड की और लैंग्वेजेस हैं। चाइनीज वर्ड्स हैं मोस्टली, कुछ इंग्लिश हिंदी वर्ड्स हैं, कुछ संस्कृत वर्ड्स हैं, अदर लैंग्वेजेस के वर्ड्स हैं, वो ऑल ओवर द अरबियन वर्ड्स भी हैं। इन सभी लैंग्वेजेस के जो वर्ड्स आते हैं उनसे डिक्शनरी बढ़ती जाती है। इस तरह से ये वर्ड्स आप देखेंगे एंथ्रोप से और एंथ्रोप मैनकाइंड से रिलेटेड जितने भी मैन से रिलेटेड वर्ड्स हैं, ये वोकैबुलरी है आपकी, ये स्ट्रांग हो जाएगी। 50 to 60 वर्ड्स आपको अगेन गेन हो गए। देखा आपने, तो आप इससे बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। इन 10 और 12 वर्ड्स में से आपने देखा, आपकी डिक्शनरी बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। आप देखेंगे यू विल बी ए वेरी गुड पर्सन आफ्टरवर्ड्स, वेरी गुड स्पीकर, वेरी गुड कम्युनिकेटर, ओके, वेरी गुड लिसनर, वेरी गुड राइटर। Writing is must, otherwise one cannot write words if one is not having basic knowledge of words, vocabulary is must for a person, okay? That is what the main objective of mine here, because जो persons पढ़ते हैं, रेगुलर स्टडी करते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा important वर्ड वो है, टॉपिक है। This topic roots, prefix, suffixes is not a simple task. Let me tell you one thing, because I have got all this information from different sources. Different sources means dictionary is the main source. Then from other sources available in the library. We have found in the library I have number of sources from there, okay, and from the students' information. And most of my students are just appreciating this task of mine. Okay, so please just give some more information if you want to get. You can get some more information. The remark section, give some remarks, send your messages to me, okay, so that I can improve on this topic or whatever you like, positive or negative. If you cannot appreciate, then say something negative, no problem at all. I always welcome negative, positive responses from my student side, from anybody's side, whosoever my friend is there, okay. I always consider everything as a blessing from mankind, okay. Everything is blessings, even if negative, positive comes from negative. If there is positive, negative, negative word is going to improve you, going to give you some more suggestions that can be accepted. But if you are just finding out mistakes in any way, that is your nature, no problem at all. I'm not going to change you, or one cannot change others, okay. That is up to you. But the point is, इसकी हेल्प से आपको डिक्शनरी अगर बढ़ जाती है, आपकी वर्ड्स वोकैबुलरी, वर्ड पावर बढ़ जाती है, वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग हो जाती है, then I will be benefit. I will be so much grateful that yes, you have got some information. Otherwise, you may not be thankful or grateful to this source. This means of medium nowadays. The medium is so much fast that anybody who is sitting abroad or anywhere in the world can get this information easily. इसलिए मैं तो इसको बहुत अच्छा समझता हूँ। इसलिए आपको ये मेरी one of my just not request but advice or piece of advice that please study with these topics
You have to just make your own words from this dictionary. These words, select a good dictionary from there, you can find number of words. वहाँ से आप काफी कलेक्ट कर सकते हैं वर्ड्स को. वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी. आप एक डिफरेंट पर्सन होंगे. यू बी गुड राइटर, गुड कम्युनिकेटर, गुड लिसनर इवन, या गुड स्पीकर, गुड लिसनर, गुड राइटर, गुड कंपोजर. ओके, कंपोजर मीन्स राइटर. ओके, सो दैट इज व्हाट आप अपने को डिफरेंट पाएंगे. ये मेरी थोड़ा सा हम्बल रिक्वेस्ट है. यू कैन गो थ्रू दिस, और साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ स्टडी करते हैं. दैट विल बी योर ओन, दैट विल बी फॉर योर ओन बेनिफिट. ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ. ओके, देन सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर सीरीज. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपको. वो लेक्चर 6th होगा. अगेन 6th रूट बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देखोगे कि वो भी काफी आपको वर्ड्स देगा. 50 to 60 वर्ड्स आप अपने आप ही समझ सकते हैं, और डिक्शनरी आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी फास्ट. ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ. चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में. चलिए, सी यू.